Hello, students. I welcome you to today's lecture. In the last video lecture, as you must all be remembering, we had started with the explanation of the text of the chapter, that is On the Face of It by Susan Hill. In the last lecture, we had paused on page number 60 in your book Vistas, and today we will continue from that point onwards. Till now in the story, we have seen that this is basically a drama or a play with two characters. The two important characters in this drama are one, Mr. Lamb, and the other is a 14-year-old boy named Derry. So, in the story, we have seen that Derry is a boy whose face is half burnt, and Mr. Lamb is a lame man who had lost one of his legs during the war. So these two are the disabled people, and how they form a kind of friendship through a conversation that is shown in this chapter, in the text of this drama. Okay, so during the course of the play, we will see how a friendship develops between them and what is the talk that is going on between the two. This talk is important because it gives us many lessons to learn from and things that we can remember throughout the rest of our lives and which will help us grow as a person. The main focus of this chapter is disability. जैसे कि हम देखते हैं अपने आसपास लोगों में डिसेबल्ड लोग होते हैं जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज कुछ ना कुछ होती है. फॉर एग्जांपल लोग किसी को दिखता नहीं है. सम आर डेफ, सम आर ब्लाइंड, सम आर लेम, सम हैव अदर प्रॉब्लम्स. तो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हर सोसाइटी में हम लोगों में देखते हैं. किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होता है. सो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन. And still society takes this as a taboo. Society takes this as a sort of unpleasant thing जिसको लोग avoid करते हैं. ऐसे लोगों को लोग अच्छे से treat नहीं करते हैं. People avoid their company. People don't like to mix with them. So ये जो society में हमें दिखता है, this is not something very good. और इसको राइटर ने इस प्ले के थ्रू हमें इस मैसेज को दिया है दैट वी हैव टू ट्रीट देम इक्वली बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. और वैसे लोग जो होते हैं उनको कैसी फीलिंग होती है, हाउ दे फील, हाउ द प्रॉब्लमैटिक थिंग्स आर फॉर देम. तो ये हम उनके पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो टिल नाउ वी हैव सीन कि डेरी जो है वो छोटा सा लड़का, he is somehow coming into the garden of Mr. Lamb. Mr. Lamb अकेले रहते हैं और उनका एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें डेरी छुप के दीवार के थ्रू चढ़ करके दीवार को क्रॉस करके वो उनके गार्डन में आ जाता है. Why? He wants to avoid company of other people. उसको आइसोलेशन में रहना पसंद है. उसको लोगों से मिलना पसंद नहीं है, लोगों के सामने जाना पसंद नहीं है. क्यों? बिकॉज ही इज नॉट ट्रीटेड वेल. उसको लोग देख के डर जाते हैं उसके फेस को देखकर, और लोग अलग अलग कमेंट्स पास करते हैं. कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं. सो ऑल दिस इज नॉट वेरी प्लेजेंट. जब ये किसी के साथ होता है तो उसको रियलाइज होता है कि कैसी फीलिंग होती है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड फीलिंग. सो डेरी जो है वो छुपने के लिए इस गार्डन में आ जाता है कुछ टाइम पास करने के लिए. एंड देयर ही मीट्स दिस मिस्टर लैम. मिस्टर लैम वहाँ पे होते हैं बिकॉज दैट इज हिज गार्डन, एंड अ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स बिटवीन द टू. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 60 where we had stopped. So Derry is saying, does your leg hurt you? He is talking to Mr. Lamb. Mr. Lamb, tin doesn't hurt, boy. Derry, when it came off, did it? Suddenly. Derry, and now I mean where the tin stops at the top? Mr. Lamb, now and then in wet weather, it doesn't signify. Derry, oh, that's something else they all say. Look at all these people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Mr. Lamb, I haven't said that. So,
व्हाट इज हैपनिंग, उनकी बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं. ओके, अब डेरी उनसे क्या पूछ रहा है मिस्टर लैम से. अब वो थोड़ा उनके साथ कंफर्टेबल हो रहा है. पहले वो बस वहां से जाना चाहता था व्हेन ही सॉ कि वहां पे कोई है, बट नाउ मिस्टर लैम हैज मेड हिम समवॉट कंफर्टेबल इन हिज कंपनी. सो वो अब वहां पे रुका हुआ है और वो बात कर रहा है मिस्टर लैम से. ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू नो थिंग्स. ओके, सो डेरी इज आस्किंग मिस्टर लैम कि आपका जो पैर है, टिन लेग, क्या उसमें दर्द होता है, क्या उसमें तकलीफ होती है. सो मिस्टर लैम सेज दैट टिन डजंट हर्ट बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स हर्ट नहीं करते हैं. ओके, सो लोहे में और लकड़ी में, इन सारी चीज़ों में, कपड़ों में, इनमें लाइफ नहीं होती है. सो दीज थिंग्स डोंट गेट हर्ट, वेर एज लिविंग थिंग्स जहाँ होते हैं उनको हर्ट होता है, पेन होता है. ओके, सो when Derry asks, he says that tin doesn't hurt. So Derry asks that did it hurt when it was broken or it was blown off. So Mr. Lamb says certainly, because तब वो पैर उनका एग्जिस्ट करता था, and when in the war it was hurt, it really had hurt him a lot. So Mr. now Derry is asking Mr. Lamb that does it cause any pain. So Mr. Lamb says that when the weather is wet, when the weather is cold, then his leg hurts, but it doesn't signify, like it doesn't matter to him much because he has got used to that pain. Okay, सो मिस्टर लैम के अंदर हम ये क्या क्वालिटी देखते हैं, दैट वो हर नेगेटिव चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं. सो ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर इन दिस ड्रामा. ओके, so Derry says, now Derry has something to say, something about his experience. Okay, he says that लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि देखो उन लोगों को जिनके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कितना कुछ सहना पड़ता है, एंड स्टिल वो लोग क्या करते हैं, वो कभी नहीं रोते हैं, एंड दे ऑल ब्रेव इट वेरी इन अ वेरी नाइस मैनर. मतलब उनको जो भी तकलीफ होती है वो उसको सह लेते हैं एंड वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं. ओके, सो उनसे देख के तुम कुछ सीखो. ओके, सो मिस्टर लैम्प व्हाट डज ही से, आई हैवंट सेड इट. सो इससे क्या हमें पता चलता है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू गिव लेक्चर्स टू अदर पीपल, कि आप उससे देख के सीखिए, अपने दुख को बड़ा मत समझिए. ओके, बट जिसको दुख होता है या जिसको तकलीफ होती है या जिसको प्रॉब्लम सफ़र करने पड़ते हैं लाइफ में, उनको उसकी असलियत पता होती है. दे नो द रियलिटी, दे नो द वेट अपॉन देयर हार्ट. ओके, सो वी शुड नॉट बी लिटिल एनी वंस पेन. किसी के भी दुख को, दर्द को, तकलीफ को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए. And we should also stop giving lectures to other people. Okay, because when there is pain, it hurts. Okay, so Mr. Lamb agrees with Derry and he says that ऐसा लोगों को नहीं बोलना चाहिए, and even I don't say such things. I don't also start giving lectures to other people, because जब दर्द होता है तो तकलीफ obviously होती है. So what does Derry say? And think of all those words of people worse off than you. Think, you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. So what does Mr. Lamb say? And that's all true and you know it. So Derry goes on to say कि लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे लोगों को सोचिए, जब आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, पेन होता है, तो आप ऐसे लोगों को याद कीजिए जिनकी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं. ओके, एंड दोज पीपल जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं या बाय बर्थ डेफ होते हैं या वो बाय बर्थ उनका ब्रेन कुछ प्रॉब्लमैटिक होता है, सो दे आर बॉर्न फूलिश और मैड. सो थिंक अबाउट दोज पीपल. So what does Mr. Lamb say? It is all true. Okay, and I don't have to say it, you know it as well. So what does Derry say in return to this? He says that it won't make my face change. Like whatever the positive thinking is that Mr. Lamb is talking about, Derry says that whatever positive thinking people talk about, that is not going to change the disability. Okay, it is not going to make him look any better. It is not going to make his burnt face any better. So he says that, do you know, one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard. She said, look at that. That's a terrible thing.
That's a face only a mother could love. So, Derry is telling one of his experiences when he was walking by somewhere at a bus stop. And then there were two women, and one woman was saying to the other, she was almost whispering very slowly that look at that boy and his face, and that is something very terrible, and it is a face only a mother can love, because a mother's love for a child is unconditional. Generally, जो mothers होते हैं, they don't care about how their child looks, about they are clean or dirty, they are ugly or beautiful. Mother's love is unconditional. So that lady was saying that that is a face which only a mother could love. So Mr. Lamb says response to this story by Derry, and he says, "So you believe everything you hear then?" And Derry says, "It was cruel." So Mr. Lamb says, "Maybe not meant as such, just something said between them." Derry, "Only I heard it. I heard." So Mr. Lamb is again responding to this anecdote by Derry in a very positive manner. वो कह रहे हैं कि अच्छा, so those two ladies talked in that manner. So क्या आप हर बात पे believe कर लेते हैं? Do you believe in everything that you hear? So इस लाइन से हमें क्या लेसन मिल रहा है, दैट वी शुड नॉट बिलीव इन एवरीथिंग दैट वी हियर, ओके, अबाउट आवरसेल्व्स और अबाउट एनी अदर पीपल, बिकॉज जनरली लोग जो बातें करते हैं, पीपल टॉक अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस, देयर ओन ओपिनियंस, और हर किसी का ओपिनियन सच्चाई नहीं होती है, ओके. हैड दिस been the case in this world, then the world would have been एंड अटर केओस. दुनिया में अभी जितनी प्रॉब्लम्स है उसकी कहीं गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते अगर हर किसी का ओपिनियन सच्चाई होती. सो यहाँ से हमें क्या मैसेज मिल रहा है मिस्टर लैम की इस लाइन से, दैट वी शुड नॉट बिलीव इन एवरीथिंग दैट वी हियर, we should learn to avoid things as well, we should learn to discard opinions as well, okay. So what does Derry say? No, it was not something that I believed, but it was something cruel, and so it hurt Derry, okay. So generally ऐसा होता है कि हमें दूसरों लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती and we get hurt. Generally जब वो हमारे बारे में बात करते हैं या about someone who is close to us, but we should not take it to our heart, we should not take everything to our heart, otherwise what will happen, life में हम every moment will keep getting hurt and nothing will come out of it, okay. So Mr. Lamb says, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? So Mr. Lamb goes on to say that there are many things people say. So is that the only thing, that negative thing, is that the only thing that you ever heard someone say in your life? So Derry says, oh no, I've heard a lot of things. And Mr. Lamb says, so now you keep your ears shut. And Derry says, you're peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. So Mr. Lamb is talking in a very mature manner. He's talking in a very experienced manner. And he says that there are so many things people say, so you've heard only this negative thing. So Derry says, no, I've heard many positive things as well. And so Mr. Lamb says, so now what has happened? Now you don't hear those positive things. So Derry gets kind of annoyed. And what does he say? He says, you are peculiar. आप बहुत अजीब बातें करते हैं, आप बहुत अजीब सवाल करते हैं, okay. So why does he say all this? Because Derry is used to the negativity in his life, and the positivity that he is seeing in Mr. Lamb is something very undigestible for him. So he says that you are very peculiar, okay, because he has not met anyone so positive till now in his life. So he's going to have a positive effect on him when the story ends, okay. Mr. Lamb says, I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gate's open. So when Derry seems annoyed and kind of Derry को जब problem सी लगती है और वो जब ये बात बोलता है that you are peculiar, so what does Mr. Lamb say? मुझे बात करना अच्छा लगता है. I like company. Unlike
डेरी. ओके, डेरी को कंपनी पसंद नहीं है लोगों की, बट मिस्टर लैम लाइक्स कंपनी. इन फैक्ट ही लव्स कंपनी. एंड व्हाट इज ही गोज ऑन टू से, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस. लाइक मैं बहुत सारी सवाल पूछ रहा हूँ और अगर आपको बोल मतलब आंसर नहीं करने, सो यू कैन अवॉइड देम सिंपली. डोंट टेक प्रेशर. ओके, एंड यू डोंट इवन हैव टू स्टॉप हियर. यू कैन गो wherever you want to go. So the gate is always open. So what does Derry say? Yes, but so he's kind of hesitating. He realized that he should have been more polite. So what does Mr. Lamb say? I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say, bees buzz. But when you listen to bees for a long time, they hum. And hum means sing. I hear them singing, my bees. So when Derry is still over there, Mr. Lamb goes on to say, and he says that there is the beehive, मधुमक्खी जो होते हैं उनका जो छत्ता है वो है उनके गार्डन में. एंड जनरली लोग क्या बोलते हैं कि बीज जो होते हैं वो बज करते हैं और उनकी जो ये सॉम जो होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत बजिंग साउंड होती है. बट व्हाट इज मिस्टर लैम से, उनके हिसाब से बीज जो होते हैं वो हम करते हैं. एंड व्हाट इज हमिंग? हमिंग इज सिंगिंग. इट इज अ वे ऑफ सिंगिंग. सो मिस्टर लैम इज अगेन यहाँ पे ही इज अगेन टॉकिंग वेरी पॉजिटिवली. ही इज अगेन गिविंग इट अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू द हमिंग ऑफ बीज. एंड ही सेज दैट इट इज अ वेरी स्वीट सिंगिंग एंड ही हियर्स देम ऑफन. So Derry responds, but I like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. So Derry is still in his thoughts. वो मिस्टर लैम की बात उतने ध्यान से नहीं सुन रहा. ही स्टिल इन हिज थॉट्स. सो ही सेज कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है. ओके, आई केम इन जस्ट लाइक दैट. मैं कंपनी अवॉइड करने के लिए आया बट आई एम लाइकिंग इट ओवर हियर. सो मिस्टर लैम सेज, इफ यूड सीन मी यूड नॉट हैव कम इन. Derry, no. Mr. Lamb, no. Derry, it had been trespassing. So Mr. Lamb says that okay, but if you would have seen that I'm in over here, तुम नहीं आते यहाँ पे. You wouldn't have come into the garden. So Derry says yes, I wouldn't have come. So Mr. Lamb says that yes, you wouldn't have come. So they both agree. They both say no, no. Then Derry says it would have been trespassing. Like what is trespassing? जो किसी और की प्रॉपर्टी में आप चले जाएं, ठीक है, उसकी बिना परमिशन के. सो दैट इज ट्रेसपासिंग. सो डेरी सेज दैट अगर मैं देख लेता कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये किसी की प्रॉपर्टी है, एंड देन आई वुड हैव कम, सो इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग एंड इट इज इवन it is also a criminal offense. Okay, so Mr. Lamb says, that's not why. So Mr. Lamb guess कर रहे हैं कि ये reason नहीं है. Derry is not thinking about the trespassing as the major problem. Then Derry says, I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. So Derry comes to the real reason and he says that I don't like being with people, so I would have come into this garden. Okay, so I came into this garden and जब लोग मुझे stare करते हैं और मुझसे डर जाते हैं, so I don't like all this. So generally I try to avoid people. Okay, so Mr. Lamb says you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. So मिस्टर लैम के पास फिर एक कहानी है छोटी सी बताने के लिए. एंड ऑल हिज लिटिल स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न. ओके, सो मिस्टर लैम के वर्ड्स जो हैं दे आर लाइक पर्ल्स ऑफ विजडम फॉर अस द रीडर्स, एंड दे आर मेंट डायरेक्टली फॉर डेरी in the drama. So what does he say? That okay, you don't like being near people, but I'll tell you a story. कि एक आदमी था, वो उसको डर था
कि वो जब पब्लिक में जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो क्या होगा कि लोगों के बातचीत में, लोगों से इंटरेक्ट करने में जर्म्स उसकी बॉडी पे आएंगे, या वो रोड पे पास करता होगा तो मे बी कोई एक डंकी हो जो उसको किक कर दे और वो मर जाए, बिकॉज डंकीज किक वेरी हार्ड। ओके, एंड देन वो उस इंसान को ये भी डर लगता था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो मर जाएगा। ओके, और if he falls in love with a girl and that girl rejects him, doesn't love him back, so it will also break his heart. Then it might also happen that he slips on a banana skin. So घर से बाहर निकलने से इतनी सारी आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं टू गेट हर्ट, कि वो इंसान जो था वो इस डर से वो अपने घर में ही अपने आप को उसने लॉक कर लिया था, एक रूम में उसने अपने आप को लॉक कर लिया था, एंड ही यूज्ड टू स्टे ओवर देयर ओनली. सो डेरी आस्क्स, फॉरएवर? Mr. Lamb, for a while. Derry, then what? Mr. Lamb, a picture fell off the wall onto his head and killed him. So, मिस्टर लैम क्या बता रहे कि उसने ऐसा किया कुछ दिन के लिए, तो क्या हुआ कि उसके सर पे एक पिक्चर गिर गया उस रूम में, एक कोई पिक्चर था, एंड दैट फेल ऑन हिज हेड एंड इट किल्ड हिम. एंड डेरी laughs a lot when he hears this. So he realizes that it was a foolish thing to do, to lock oneself in the room just for the fear of dying when we go outside. So Mr. Lamb says, you see, Jerry, but you say peculiar things. Mr. Lamb, peculiar to some. Jerry, what do you do all day? Mr. Lamb, sit in the sun, read books. Ah, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things. Full. Jerry, but there aren't any curtains at the windows. Mr. Lamb, I'm not fond of curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the window open to hear the wind. So, Derry says that there are no curtains in your house. So, Mr. Lamb says that I don't like shutting things out or in. I like things very easy and things open and clear and transparent. So he likes the air coming in through the windows and the scenery outside. So he hasn't put any curtains in his house, and he also says that he has a lot of books inside and it is not really an empty house. So Jerry says, yes, I like that. When it's raining, I like to hear on the roof. Mr. Lamb, so you're not lost, are you? Not altogether. You do hear things. You listen. So Derry says that yes, I also like the sound of the rain when it rains, and on the roof the sound of the rain is very soothing for Derry. So Mr. Lamb takes out a positive point over here and he says that so you like things. Okay, you are not completely lost in the negativity that is around you. So यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, that Mr. Lamb is kind of discovering the real Derry for himself. Okay, so वो डेरी की मदद कैसे कर रहे हैं, वो डेरी को खुद उसकी असलियत दिखा रहे हैं. ही इज टेलिंग हिम his own personality through his own words. Okay, like when Derry says that I like the rain, so he makes him realize, okay, so you like the rain. ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ नेगेटिव सोचते हो, you also think positive. Okay, so इन द प्रीवियस स्टोरी जो हम देखे कि वो एक आदमी जो अपने आप को लॉक कर लेता है, इस स्टोरी में भी मिस्टर लैम ने क्या मैसेज दिया. ही गेव दिस मैसेज दैट यू कैन नॉट अवॉइड बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. लाइफ इज मेड अप ऑफ बोथ गुड एंड बैड मोमेंट्स एंड वी हैव टू लर्न एंड कीप मूविंग थ्रू आउट लाइफ विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एज फॉर एवर. सो लाइफ में अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों होते हैं और हमको उन दोनों को लेकर चलना होता है. दैट इज कॉल्ड लाइफ. ओके, लाइफ इज नॉट ओनली मेड ऑफ just positive experiences for anyone at all, and so we have to learn from the failures and from the negative experiences and keep moving forward in life. Okay, so what does Derry say? They talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we've gone? How will ever he get on in this world looking like that with that on his face? That's what they say. सो डेरी अब क्या बता रहे हैं, अब थोड़ा अब वो पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि उनके घर के लोग कैसे बात करते हैं. इस तरह बात करते हैं कि what will this boy do? He has no prospects in life. He has this ugly face, and how will he get on in this world? Okay, so Mr. Lamb क्या बोलते हैं? Lord boy, you've got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You've got a tongue and a brain. You'll get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Derry, how?
Mr. Lamb, same way as I do. Derry, do you have any friends? Mr. Lamb, hundreds. Derry, but you live by yourself in that house. It's a big house too. So Mr. Lamb says that mm, Derry only has a burnt face. Derry का क्या सोचना था कि उसका इतना अगली सा फेस है, बट मिस्टर लैम क्या बोल रहे हैं that you only have a burnt face. So this only adds a great amount of positivity कि सिर्फ तुम्हारा फेस ही जला हुआ है या it is not very good to look at, but the rest of your body is fine and you can get on in life as you want in whatever manner you want, just like normal people do. Okay. So Derry asks how, and Mr. Lamb says, same way as I do. So now he talks about friends, and Mr. Lamb says that he has friends everywhere. People come in, everybody knows me, the gate's always open, they come and sit here and in front of the fire in winter. Kids come for apples and pears, and for toffee, I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. Derry, but I'm not a friend. Mr. Lamb, certainly you are, so far as I'm concerned. What have you done to make me think you're not? Derry, you don't know me. You don't know where I come from and even what my name is. Mr. Lamb, what should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? Derry, I suppose not. No. So, Mr. Lamb says that हर कोई उनका फ्रेंड है और छोटे छोटे बच्चे जो फ्रूट्स लेने आते हैं, जो उनके लिए वो टॉफ़ी बनाते हैं, एंड people who come and keep coming and going in his garden, so they all are his friends. So Derry says, but I'm not your friend. So Mr. Lamb says that obviously you are also my friend, and what does make you think that you are not my friend? So Derry says that आप तो मुझे जानते भी नहीं है, okay, and मैं कहाँ से आया हूँ and what my name is. So Mr. Lamb says that क्या फ्रेंड बनने के लिए आपका नाम मुझे कहीं फाइल में रजिस्टर करना होगा, देन यू विल बिकम माई फ्रेंड. सो ही इज टॉकिंग वेरी in a very practical manner, and Mr. Lamb says that what is friendship? Friendship is a bond of the heart. Okay, and we need not know people know every detail about them to make them friends. Okay, basically दोस्ती कैसे होती है, पहले हम लोगों को जान लेते हैं, दोस्ती हो जाती है, उसके बाद हम उनके रियल डिटेल्स पता करते हैं. फर्स्ट हाउ वी कनेक्ट थ्रू टॉक, वी कनेक्ट थ्रू बिहेवियर. ओके. So this is another important message on friendship that Mr. Lamb is giving us to the readers as well as to Derry. So Derry also agrees that okay, you're right. So in this manner we are also friends. So this is where we'll pause today, I suppose. And in the next lecture we will continue from this point onwards. So please read the chapter as I always tell you, and see you again. Until then, take care of yourself and keep studying. Thank you.